In the name of Allah, Assalamu alaikum, dear students. I am known Imtiaz. Today we shall talk about the concept of imagery, one of the figures of speech in English language. What is imagery or image? We can define this term as the mental pictures created in reader's mind by the writer with the help of words and language. इमेजरी या जिसे हम उर्दू में कलमी तस्वीर या मंजर कशी कहते हैं, मंजर कशी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो राइटर्स होते हैं, जो मुसन्निफ होते हैं, वो रीडर के माइंड में या लिसनर के माइंड में एक पिक्चर, एक इमेज क्रिएट करते हैं, तस्वीर कशी करते हैं अपने अल्फाज से, अपने लैंग्वेज से. उसी को हम कहते हैं इमेजरी या मंजर कशी. सो लेट्स डिफाइन द टर्म. द मेंटल पिक्चर्स created in readers or listeners mind by the writer with the help of language and words. So in the simplest terms, we can say imagery is the word picture. Word picture. The writer creates word picture in reader's mind or listener's mind. So they are mental images or mental pictures. Why writers make use of imagery? They make use of imagery to evoke imaginative and emotional response from their readers and listeners. So what's the function of its function is imaginative and emotional response. It's its function. It has one more function. It provides vivid and effective description. Viewed and clear description. In other words, we can define imagery as representation of sensory experience by means of language or words. Representation of sensory experience by means of words, means of language or words. Writers make their readers and listeners experience different pictures. These pictures can be of different types. As the number of senses, we as humans have 5 senses. So is the number of images in English. As you know, we have sense of sight. So we have sight imagery or visual imagery. We have sense of hearing. We sense things by making use of our ears. So it's called sound imagery. We smell with the help of nose. So we have smell imagery. We taste with the sense organ
tongue, that's taste imagery. Now we feel or we touch with the help of our skin, or we feel it. So it is feeling experience. We have five images in English. So simply जो imagery है ये एक रिफ्लेक्शन होती है सेंसरी एक्सपीरियंस की. जो राइटर्स होते हैं वो एक रीडर और लिसनर को एक्सपीरियंस कराते हैं डिफरेंट. दे कैन मेक देम सी सम सीन. उनको कुछ दिखा सकते हैं. दे कैन सी विद देयर ओन आईज. या कुछ सुन सकते हैं या कुछ सूंघ सकते हैं या कोई चीज टेस्ट कर सकते हैं या फील कर सकते हैं. सो दीज आर द इमेजेस. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू मेक इट क्लियर. विजुअल इमेजरी. For example, man with black. What comes to your mind? आपके जहन में क्या आता है? एक आदमी जिसने black dress पहना है. So it creates picture in your mind. So this is visual or sight imagery. You see something with your own eyes, or at least you see it in your imagination, in your mind. आप अपने जहन में देखते हैं. आप अपने जहन से इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं. Sound imagery. Ringing of bell. बेल का सुनना, इसकी साउंड को सुनना, ये साउंड इमेजरी है. So when you hear something, it's sound imagery. Smell. Smell of rose. गुलाब की खुशबू. तो जब एक राइटर आपको एक्सपीरियंस कराए किसी चीज की स्मेल, तो इस ये दैट्स स्मेल इमेजरी और स्मेल एक्सपीरियंस. टेस्ट इमेजरी. फॉर एग्जांपल, टेस्टी or salty biscuits. So here we taste with our tongue. हम किसी चीज का मजा लेते हैं तो ये टेस्ट इमेजरी हुई. फीलिंग. You caused me much pain. Feeling of pain, so it is feeling image. Now let's take some examples from your prescribed poems. अब कुछ poems में हम pick up करते हैं कोई some particular images so that we can clearly understand what imagery is. Firstly, we shall take some images from Yeats's When You Are Old. When You Are Old by W.B. Yeats. He makes use of a number of his images in this poem. For example, old and grey and full of sleep. The poet is talking about a woman, old woman, who is old and her hair has turned grey and she is full of sleep and drowsy. तो एक औरत की, जो बूढ़ी औरत है, उसकी इमेज हमारे सामने आती है. उसके बाल भी सफेद हो चुके हैं एंड शी इज फीलिंग ड्राउजी, शी इज फीलिंग स्लीपी. तो एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट करता है शायद यहाँ पे. वन मोर एग्जांपल. क्राउड ऑफ स्टार्स. तो हमारे जहन में स्टार्स का एक क्राउड, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स आ जाता है. तो ये again visual imagery है यहाँ पे. Now we shall take some examples from Kamala Das's My Mother at 66. उसमें से हम कुछ images लेते हैं. My mother at 66 is written by Kamala Das. कमला दास ने एक पोएम लिखी है, उसका नाम है माई मदर एट 66. उसमें वो बहुत सारी इमेज का इस्तेमाल करती हैं. हम उसमें से एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं. लेट विंटर्स मून. Here the poetess is talking about her mother. She's as old, she's as colorless as that of late winter's moon. So यहाँ पे हम
इस विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून को देख सकते हैं, चांदनी को देख सकते हैं जो मुरझा जाई हुई है, जो कलरलेस है। तो ये विजुअल इमेज है। एक और एग्जांपल देते हैं, एशन एशन फेस लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो यहाँ पे हमें एक फेस नजर आता है जो एशन है, जो पेल है, जो कलरलेस है। तो एक्चुअली द पोइट इज टॉकिंग अबाउट हर मदर हु वाज about to die, or it shows her approaching death. Now let's take some more examples from Faiz Ahmed Faiz's Speak Up. Faiz, Speak Up. Speak Up. For example, sympathy. Sympathy. Feta. Padlocks. Red Oven. Phrase films. He used a number of images in this poem. So here these images, they describe different things in a smithy, in a blacksmith shop. तो यहाँ पे हमारे जहन में एक blacksmith shop आता है, एक smithy आती है. So this is again imagery. Now we shall take some other examples from An Evening Wet with Rain, written by Wedball Deep. An evening wet with rain, wet ball. शायर ने जो टाइटल यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एन इवनिंग वेट विथ रेन, हम एक चीज एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमें एक्सपीरियंस करना एक रेनी इवनिंग का, रेन विच एन इवनिंग विच वाज वेट विथ रेन, एक इवनिंग, एक शाम देखते हैं जब बारिश बरस रही थी. तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे. वन मोर एग्जाम्पल, स्टरिंग लीव्स. तो यहाँ पे हम लीव्स को देखते हैं, दे आर स्ट्राइकिंग ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, साउंड ऑफ symbol. Sound of symbol. Listening to the sound of symbol. हम यहाँ पे एक, so this is sound imagery. हम यहाँ पे एक आवाज सुनते हैं, symbol की आवाज सुनते हैं, तो it is sound imagery. So this was about imagery. So let's quickly revise what imagery is. Imagery simply means pictures produced with the help of words and language by the writer. तो जब राइटर रीडर्स के जहन में या लिसनर्स के जहन में एक तस्वीर खींचता, मंजर कशी करता है अपने अल्फाज की बदौलत, तो उससे हम इमेजरी कहते हैं. या इन सिंपलेस्ट टर्म्स वी कैन से इमेजरी इज वर्ड पिक्चर, words, pictures created out of words. We shall end our topic with William Shakespeare's imagery. He makes use of a beautiful imagery in his book Titus Andronicus. Shakespeare says, "These words are like razors to my wounded heart." So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.